को बोला था ऑरेंज सिंदूर, वाइट बिंदी और ग्रीन लिपस्टिक लगा के आने, बट सुना नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं हूं आपका फ्रेंड केतन और आज का व्लॉग है बहुत ही खास बिकॉज बहुत दिनों के बाद मैं करने जा रहा हूं काइंड ऑफ अ डेली व्लॉगिंग। बहुत फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि आजकल क्यों नहीं करते हो, ऑफिस में बहुत काम होता है आजकल तो टाइम नहीं मिलता। तो आज मेरे ऑफिस में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, तो मैंने सोचा इसी बहाने आज का व्लॉग कर लेता हूँ। तो अभी सो के उठा हूँ, ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ, लंच की तैयारी करूँगा और इसके बाद निकलूँगा ऑफिस के लिए। तो आइए मेरे साथ देखते हैं आज मेरे ऑफिस में यानी इक्विटी नॉलेज पार्टनर्स में कैसे सेलिब्रेट हो रहा है इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ लंच के लिए मैं क्या लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले आप सम छोले एंड अनार की सैलड विद सम कर्ड और क्रंच के लिए थोड़ा सा भुजिया विद पीनट्स। ऑफिस में सेलिब्रेशन के लिए मैंने पहन लिया है ग्रीन कुर्ता और ये है ऑफिस का डेकोरेशन विद बलून। बहुत ही मिनिमलिस्टिक डेकोरेशन है बट इट वाज वेरी नाइस। और ये ट्राई कलर बटरफ्लाइज, ये हमारे ऑफिस का कैफेटेरिया है बाय द वे। एज पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफिस में एक मॉडल मेकिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका था थीम इंडिया ऑफ योर ड्रीम्स। वो टीम्स को बनाना था इंडिया ऑफ देयर ड्रीम का एक मॉडल, जिसके लिए अलग अलग टीम्स ने अलग अलग थीम डिसाइड किया है। सारी टीम्स ने बहुत ही बेहतरीन मॉडल बनाया था। इन टीम ने बनाया था राइट ऑफ इक्वालिटी के ऊपर एक मॉडल। इस मॉडल में इंडिया को ग्रीन एनर्जी का पायनियर दिखाया गया है। यहाँ पर इंडिया को अक्रॉस वेरियस फील्ड्स लीडर शोकेस किया गया है। What do you understand out of it? Rivers flowing around. Rivers. Fish. So it's all water body. Okay. It's all related to water, basically. This is your model. Our model. Yeah, of course your teams. What is this, by the way? It's interlinking of rivers. That's what we guessed it to be. Absolutely. I guessed it correct. Yes, Sagar? Yeah, you guessed it correctly. Give me the prize. Quickly. Miss हो गया भाई. How come, yaar? Give me the prize. No, sorry. Where's the chocolate? Miss हो गया यार. Okay. Oh, there's another model coming. Oh, there's one more. Oh, thank you, Sagar. I won this for guessing the correct model. और ये है हमारी HR मोहतरमा। India has completed 76 years of independent nation, and as a nation, India hosts diverse traditions and cultures. So let us all come together and celebrate this great occasion together. Before we move ahead with the celebration, I would now like to invite the Bangalore Central Head Ajay Mishra to come here and share his opening remarks. A huge round of applause for Ajay. Thank you, Nandita. A very happy Independence Day. Many congratulations on this great event, and I look forward to a more fun-filled event for the next 60 minutes. Thank you all. Up next we had a competition for the best dressed person, जिसके साथ हर पार्टिसिपेंट को कुछ लाइंस बोलने थे अबाउट इंडिया ऑफ देयर ड्रीम। तो मैंने भी इस गेम में पार्टिसिपेट किया एंड दिस इज व्हाट आई हैड टू से। पहले तो स्वाधीनता के इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। इंडिया ऑफ माई ड्रीम। कुछ लोगों को पता होगा कि मैं ट्रैवल ब्लॉगर भी हूँ, ट्रैवल एंड फूड ब्लॉगर भी हूँ। सो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स वुड बी दैट when we can attract tourism across globally to India, when people prefer across globally to come to Khajia, Srinagar over Mount Alps, when people prefer to come to Kovalam or Pondicherry over Miami, when people prefer to come to Nalanda University over Oxford and Cambridge,
when for health purposes people come to India rather than think of relocating to Canada. क्योंकि वहाँ पे you pay good taxes and you enjoy great benefits, healthcare benefits. India में we hardly think of going to a government hospital. India of my dream would be when each one in this room would prefer going to a government hospital rather than a Fortis, Apollo, Cloud9. So India of my dream would be when people would prefer going to Goa over Vegas. और मेरी वाइफ भी मुझे अकेले उस टाइम गोवा जाने दे। मेरा ड्रीम वो अगर ये सुन लेगी तो मेरा ड्रीम नाइटमेयर में भी बदल सकता है। So yeah, that's the India of my dream. And आज का theme is tricolor. So I'm wearing orange, I'm wearing green, I'm wearing white. Blue कहाँ Blue पर is है? important, right? So I'm an Indian, I bleed blue. That's it, everyone. Thank you so much. This is Ketan Jaiswal from Commercial Lending, Kipling. Gender equality for everyone. So it is going to be a woman empowerment. That the woman should have each and every right like a man. And the woman can also go to Goa with her friends. Not the only boy. Okay, so... Up next, we had a round of quiz on India's trivia for all employees. Who led the Green Revolution in India in the year 1960s? Go Swati, go Swati, go, go, go. MS Swaminathan. The answer is correct. A huge round of applause for Durgesh. Indira Gandhi became the first woman Prime Minister of India. Go, 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 go. 1982. No, the answer is wrong. 1966. The answer is correct. Again, Durgesh has won. What? He's an historian or what? Alright, now no more chances for Durgesh. Who designed India's national flag? Go Swati, go, 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 Swati, go. Please. Okay. We have two people here. Yeah, you can come. Pinglai Venkata. Who said Manish Malhotra? The winner is here. Why did you say Manish Malhotra? I said Manish Malhotra. India's national song, Vande Mataram. I think Ashok Chatterjee and Choti Bhatt Same people. Who gave the slogan Jai Hind? Go, 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 go. Not you again, please. Oh no. Anyone? Who gave the slogan Jai Hind? अरे Champakaran. So the next question is, who was the president of India? Here's the question first. ये तो KBC वाली बात हो गई. Okay. Who was the president of India at the time of its Golden Jubilee Independence Day celebration in 1997? Definitely it was not Rajendra sir. No, the answer is not there. No. Jyoti Basu? No. Seriously? Shankar Sharma. Correct. The answer is Shankar Dayal. Go Vishwa! We'll have the last question now. What is the meaning of Satyamev Jayate inscribed at the bottom of the national emblem? Truth always wins. Truth always wins. Correct. The answer is correct. Thank you everyone. Hi fan. Hello fan. So guys, this was the best model by far representing India of my dreams, जहाँ पर shadow की टेक्निक से पूरा इंडिया को दर्शाया गया है और हर individual pieces represent something about India. It was a sheer piece of an art with physics. Up next we had announcement for best dressed people, जिनमें से ये मोहतरमा एक हैं. मैंने तो नव्या को बोला था ऑरेंज सिंदूर, वाइट बिंदी और ग्रीन लिपस्टिक लगा के आने, बट सुना नहीं उसने.
What about you, Ketan? Cross your fingers. It's this Ketan. Ketan from Nigeria. How are you feeling, Ketan? How are you feeling? On top of The winners. Please हमको भी share. Oh, chocolate. Yeah. Okay, bye. What? Why you dressed so badly? Oh, thank you so much. So we have arranged some refreshments for you. ढक्कन खुल गया. Yes. चलो. इंतजार की घड़ियां खत्म हुई. आ गया है वो शुभ मुहूर्त जब हम खाएंगे. Let's go. Yeah, the moment everyone has been waiting for. So Navya, attack. So Navya, what do we have inside this box? Mystery box. Yeah. कांति स्वीट्स है तो समोसा हो सकता है. You should guess. Yeah, tell me. Yes. Too much of guesswork going on. Samosa, kachori, Kachori. Kachori. And tricolor sweet. tricolor sweet, And this is chutney. pudina chutney. What is in this? Tamil. What is this? And that might be Might be mixture. no. Then Something what's that? crisp. Muruku. Open and show us and tell. Okay, let me show. Jalebi. Jalebi. No. Jalebi. Papad. Papad. Chips. Oh, chips. Wafers. Hey, potato chips. Yeah. Chalo, let's dig into our meals. Let's say bye bye. So guys, मैं घर पहुंच चुका हूँ. पूजा को चल के बताता हूँ और देखता हूँ उसका रिएक्शन कैसा है. पत्नी देवी. Guess what? आपको फर्स्ट प्राइज मिला. कितना फेक रिएक्शन है. बोले क्या चीज में प्राइज मिला मेरे को? डांस करने में, नहीं गाना गाने में, नहीं. इतना बेसुरा इंसान को कोई प्राइज देगा? कॉमेडी करने में. लगेगा. नहीं, आज ऑफिस में बेस्ट ड्रेस्ड पर्सन का बेस्ट ड्रेस्ड है. ऑफिस में सब इससे भी खराब पहना था. नहीं, एक्चुअली हम स्पीच इतना मस्त दिए कि सब एकदम फ्लैट हो गया. हाँ, तो हमको इंडिपेंडेंस टू यू सेम क्वेश्चन आया था क्या लास्ट टाइम? नहीं, इस बार था इंडिया ऑफ योर ड्रीम, तो एकदम मस्त जवाब दे दिया. बताइए गिफ्ट में क्या मिला? एक गोल्ड कॉइन. नहीं, प्रमोशन बना दे रहे, सीधा डायरेक्टर बना दे रहे. सो गाइज, यहीं पे एंड करता हूँ ये व्लॉग. उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक कमेंट्स. क्या क्या मिल सकता था? चॉकलेट बेच रहा मैं दे सकता था ना. पूजा इज वेरी अपसेट कि ऑफिस में ऑलरेडी चॉकलेट्स खत्म हो चुका है. तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा. डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू सून इन अनदर एपिसोड. टिल देन, ईट टेस्टी एंड स्टे हैप्पी. बाय बाय.